भारत में देखिए आप, अकाउंटिंग प्रोफेशन एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जितना कर रहे हैं इन ओवरऑल पब्लिक सेक्टर is actually a fraction of the potential. Thank you so much, Srinivas, for being on the show. धन्यवाद धन्यवाद शुभम, आपका शो में आने के बहुत बहुत खुशी हो रहा मुझे। Oh my God, Srinivas, आप वॉशिंगटन डीसी में इस समय और आप हिंदी से अपना इंट्रोडक्शन की चालू कर रहे हैं, अमेजिंग। तो श्रीनिवास, आई नो कि मैंने भी आपसे रिक्वेस्ट किया था कि यू स्टार्ट इन हिंदी एज वेल एंड कीप इट मोर हिंदी एंड देन इंग्लिश। हाउ डू यू फील स्पीकिंग हिंदी इन अ इंग्लिश नेशन? बहुत अच्छा लगता है because that's something which lot of people who know Hindi would one surely appreciate. हमेशा अपना लैंग्वेज में बात करने का मजा ही अलग है। Absolutely, I truly agree with that, Srinivas. So now let's go back. सभी लोग जानते हैं कि you are very successful, you are leading a thriving career, but इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से हुई थी, and that was India. So let's go back and see कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी. What made you a CA? क्या आपकी इच्छा थी अंदर से या किसी ने आपको बोला कि oh no, you do CA because it's a good course? How was that journey and how it led to your current growth? थैंक्स शुभम। ये तो मेरा दोस्त जो बचपन का दोस्त है वो तो बोलते हैं कि ये अभी ये जो आंध्रा टू अमेरिका स्टोरी ऑफ श्रीनिवास है, श्रीनिवास तो टोटली अनलाइकली कैंडिडेट है अमेरिका के लिए। कोई नहीं बिलीव करता था मेरा स्कूल के समय में, तो बिकॉज वो नेदर मेरा इंटरेस्ट में था नॉर मेरा इवन स्कीम ऑफ थिंग्स में। जैसे आई कम फ्रॉम ए सिटी कॉल्ड एलुरु इन आंध्र प्रदेश, विच इज those days it was a town, now it grew into an city. तो and I come from a family of chartered accountants, तो सीए का तो ज्यादा इंटरेस्ट का भी नहीं बोलूंगा, वो अपने आप हो गया। बचपन से पिताजी के ऑफिस में बैठ के इनफैक्ट देखते, क्लाइंट्स आते जाते देखते, ऑडिटिंग, टैक्स कंसल्टेंसी सब होता था, स्मॉल सिटी प्रैक्टिस टाइप। सो उसी से ग्रोथ हो रहा था। So it wasn't really like CA was actually natural in the blood and it's coming naturally kind of a thing. But it's more like जैसे in the high school time, the whole idea was maybe from the beginning I was into I want to learn something different, दूसरा कुछ देखना है, दूसरा कुछ सीखना है type. But the whole thing was like eventually मेरा सिटी को और आंध्र प्रदेश को, इंडिया को क्या कर सकते हैं. So the whole it was all inward looking. It's not really a kind of a global international look there from the beginning. So it started off with like अच्छा तो ये तो है कि उस समय स्कूल में डिफॉल्ट मोड था कलेक्टर बन जाओ और सब प्रॉब्लम्स ऑफ लोग को सॉल्व कर सकते हो. तो वही आइडिया था कि ये हाई स्कूल टाइम में भी मैं सोचा था कि कलेक्टर बन जाएंगे एंड हमारा जिला का कलेक्टर बन जाएंगे और जिला का प्रॉब्लम खत्म कर देंगे. तो उधर से चालू हुआ था. And then once I finished my BCom and I started thinking that I should take civil services exam. And those days information was so little about even how to do civil services exam, particularly in small muscle towns and cities. तो उधर से एक टॉप नॉच इंस्टीट्यूट चेयरमैन के पास गया था, कोचिंग इंस्टीट्यूट का. वो बोला ठीक है तुम्हारा येलुरु में तो काफी अच्छे होगा, तुम कॉलेज टॉपर हो एंड ऑल दैट, बट ए ऑल इंडिया कंपटीशन है, 10 लाख लोग compete करेंगे, 1000 भी वैकेंसीज नहीं होगा, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, मत जाओ. So at that point of time then I looked back and said like see हमेशा बचपन से ये सुन रहा कि world's most difficult exam is chartered accountancy. एक बार सीए कर दिया तो कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं पहला सीए करके प्रूव करूंगा तो अपने आप सिविल सर्विसेज में भी आगे बढ़ेगा, was the simple narrative through which I went through the CA course and quickly finished it. And that came quite naturally because I have been seeing and orienting on CA preparation through others who were article clerks with my father. And उधर से आया और सिविल सर्विसेज के ट्रैक में गया, got selected all India 156 rank and got into Indian Audit and Accounts Service.
worked in India in many places, Shimla, Masuri, Hyderabad, accountant general, director, and other positions. So both are initial growth phase. And from government, I was deputed to Oman government, to the minister, to be an advisor to the minister. So that with that, my international career started. From Oman, I moved further to World Bank, worked in Africa, and now to Washington DC in the World Bank. So that's the overall trajectory. तो ये कभी भी ऐसा सोचा नहीं था कि ये इधर एक गोल भी नहीं था कि इधर आना है और यूएस आना है. And even now, I see that the best way you contribute is contribute back home. Like actually, अपना city को, अपना district, state, and country को contribute करना is the most satisfying thing all the time. No, that's true and such an amazing journey, Srinivas, कि आपने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे शायद वर्ल्ड बैंक में जाना है, बट सिर्फ ये अच्छा था कि कुछ अच्छा करके दिखाना है, और उस अच्छी सोच से now you are serving in World Bank, which is amazing because obviously it feels proud for people there also कि हमारी सिटी से कोई इंसान वर्ल्ड बैंक में आ जाए और वो लीड कर रहा है एक दूसरे देश में. So that's really sure. And actually, ये भी बोलूंगा कि see, the whole idea is like the as I moved on in my career, at every point of time, I felt like ये सीख लिया to a reasonable degree, and कुछ नया सीखना है so that my own effectiveness is even higher. And that naturally took me from completely local city level interest to state level interest to all India interest and now to world interest, and every experience has been super enriching. Wow, no, that's amazing. So I think आपने जो बोला, if I have to summarize, you wanted to go into civil service to serve the nation, to serve the place, the country, the city. But वो inspiration कहाँ से आई थी? Because आपकी family is of chartered accountants. So वो inspiration कहाँ से आई थी कि I want to become a, something in public domain. I want to go as a Indian accounting service. Maybe you could have chosen, let's say, some other field. But वो inspiration आपके पास कहाँ से आई? कहाँ से वो idea आया? ये थोड़ा एक natural inspiration from the angle that if your city does well, naturally everyone in the city starts doing well. Same applies to state, country, and now I see as world. And for me, World Bank, I find it to be like so exciting a place because the goal is very simple: end extreme poverty in the world and boost shared prosperity. जब आप गरीबी हटा दोगे पूरे विश्व में, अपने आप everything will go forward. So it is like overall individual development को मैं हमेशा link करता था right from my school days to something very broader. If everyone is doing well, automatically every individual will, the countries are doing well, individuals are doing well. So a relation देख रहा था पहला, but over time I understood the nuancing around it. It's not always that it would work like that. There may be institutions and organizations doing well, but it could be at the expense of individuals. So now getting this overall governance right is something also which I'm very passionate and working on, how you can do it better globally in countries. So through the World Bank, what we do is to, other than all of us know that like World Bank funding देती है developing countries को, उसके अलावा a lot of technical knowledge, global understanding, and experience sharing from one country to another. So that's where I see a lot of value from the World Bank work beyond money in getting the right practices so that each country can learn दूसरा country experience से and improve their own systems. Wow, no, that's really amazing, Srinivas. And one thing which I learned from you is having a bigger vision will automatically give you the direction. So you had a big vision that what I can do for this. And that's where you realize if I do something for country, eventually myself will be served, my family will be served, my city will be served. So having a good vision is really important. Now you are serving in a public service, Srinivas, and many people generally in India, we believe public service का मतलब है government एक job मिल जाए, that's it. So is it the same, or would you say there is some difference which we probably don't see? So public sector as a term
डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस में डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होता है. जैसे मोर लाइक इंडिया में गवर्नमेंट जॉब बोलते हैं, एंड देन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जॉब्स बोलते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज जॉब्स बोलते हैं, जैसे ओएनजीसी में जॉइन हो गया, एनटीपीसी में जॉइन हो गया, और समथिंग लाइक दैट, राइट? सो globally, all this is treated as one big public sector, that is government and all these undertakings and banks and government banks and everything is public sector banks, all are treated as public sector. One of the reasons also, जैसे आपको इंडिया में historically we have this distinction of say UPSC and state selection commissions, and so various levels of recruitment tracks to core government, which is distinct from अंडरटेकिंग्स. जैसे गवर्नमेंट कंपनी का रिक्रूटमेंट ट्रैक थोड़ा अलग, इसलिए एक्चुअली ये डिस्टिंक्शन इंडिया में बहुत ज्यादा यूज हो रहा, ग्लोबली नहीं होता है. Globally, there is a lot of like, these are all treated as one in many countries, like government companies, what they call as state-owned enterprises. Everything is treated as one bunch. And generally, the opportunities in this area are huge, enormous. It serves two purposes. एक है कि आपको government में the big difference I personally saw my movement from move from private sector to public sector essentially is that when you're doing in the public sector, government or any government related, you are contributing to that even more larger narrative of development more directly than an indirect track, because every country thrives on the what its private sector does, but it's again all that cumulatively leads to the country's development. Whereas within the public sector काफी direct रहता है, so results भी आप देखोगे, आपका action, जैसे एक पॉलिसी मेकिंग डिसीजन में स्टेज में जॉइंट सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री दिल्ली में बैठा और स्टेट लेवल में सेक्रेटरी बन के काम कर रहे हो, तो आपका जो एक्शन है उसका इम्पैक्ट लोग के ऊपर क्या है आप इमीडिएटली देख रहे हो. सो उसका मजा ही अलग है, इज व्हाट आई फेल्ट इन माय जर्नी. सो ट्रू, सो ट्रू. सो अगर आप एक पब्लिक सेक्टर में जाना चाहते हैं, टू समराइज दिस, आप इवेंचुअली इम्पैक्ट देख पाएंगे कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट समाज में क्या हो रहा है, ना कि सिर्फ आपके लोकल समाज में बट अक्रॉस द ग्लोब उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, और आपका काम दुनिया में कितनी खुशियां ला रहा है, और कितने, जैसा कि आपने बताया वर्ल्ड बैंक का जो मिशन है रिमूव द पॉवर्टी, सो आपका काम उसमें किस तरह से इंक्लूड किया जा रहा है एज एन इनपुट. तो दैट्स अ रियली सेटिस्फाइंग थिंग आई थिंक. और बहुत सारे लोग जो ये सोचते हैं कि यार मुझे देश के लिए कुछ करना है, I think for them it's a golden opportunity to really serve the nation and the world. Would you agree on that, Srinivas? Totally. So that satisfies. Easily, actually, you see also, like even if you take historically the trend also, जैसे like people either in India जो civil services exam लिखते हैं, so when I took, for example, applied for my first application I filled for civil services exam, basic salary 2,200 rupees per month था. 2,800 rupees per month था क्लास ए का IAS का बेसिक सैलरी, allowances and all मिलके कुछ. So it was like practically, even when I joined civil services, by the time next pay commission came, when I got into civil services, the salaries were slightly higher, but still I must have it must be 1/4 of my income as a partner of my dad's CA firm, right? So तो ये development aspiration and agenda, and that's what I see even in the World Bank today. बहुत सारे लोग who actually can, World Bank is a great employer and all that, but still they people who come in are essentially not motivated by the compensation and all. They are motivated largely by the ability to contribute to the global development agenda. वही मैं इवन हमारा कॉन्वर्सेशंस में यही होता है, द सैटिस्फैक्शन यू गेट. फॉर एग्जांपल, यू प्रिपेयर, आई वर्क ऑन दिस पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम स्पेस. जैसे COVID-19 आया, how does government money from Ministry of Finance go to each
district spending agency, and on time and money is spent efficiently without wastage and all. उसके ऊपर मैं काम किया and I produced papers and put it out. And practically, then governments picked up as World Bank's they picked it as World Bank's note, and then used it in the countries. And you could see later that even countries coming back and saying, we use this approach that you suggested, which helped us speed up things, which saved lives, which helped us mitigate COVID-19 better. So उससे satisfaction भी बहुत अच्छा आता है when you hear back the feedback from your work. So that's the scale, whether you're working at a national or state level government or an international organization like World Bank, you get that kind of an satisfaction from the results that you see globally or in the jurisdiction that you're working. Absolutely, Srinivas. And one more thing which I believe, if people who really want to earn good money as well, like let's say people generally join big fours or maybe some private companies. So would you say if they want to thrive, definitely from their vision perspective, but they want to have a financial stability as well. So would you tell them if there are sufficient opportunities in public sector so that they can take care of their definitely contribution as well, but their own family from financial perspective? Sure, indeed, Subham. आप आज के दिन में देखा तो, for example, even भारत में देखिए आप, accounting profession and chartered accountants जितना कर रहे हैं in overall public sector is actually a fraction of the potential. Private sector mein it is nearly like whatever it is possible there, because public sector mein the very kind of there are few entry barriers and people do not know how to get in, and this is something which is happening quite a lot globally. But so in that space, if you look at like how various countries in the world are operating, so you see much larger number of finance professionals, because eventually unless you get your finances right, country management, public administration won't work well, right? So what we are doing right now in the country is fantastic, but the enormity of opportunities is something which I would like to mention. And two, as far as the opportunities globally are concerned, there are a huge amount of opportunities. Right from starting with, say, it need not be, if you take the development agenda itself, say the kind of area that I work on, public financial management, even the consultancy opportunities for public financial management itne zyada hai globally. The question is like, acha consultants nahi hai. More and more people join. It is, and they are all very well paid opportunities. So as such, and organizations, आप UN में देखिए और World Bank, IMF में देखिए. World Bank में a lot of people have this view that शायद World Bank एक economist का organization है. आप देखिए कि yes, बहुत सारे economists तो हमेशा होगा, because it's more of the finance angle in that. But at the same time, you have huge number of professional accountants in the organization, and the opportunities are enormous. So it is more like more awareness is required into what are the public sector opportunities into either the government or into international organizations. Governments are also opening up globally. Most governments are completely opened up for lateral entry. पहला हमारा ये सोच होता था कि गवर्नमेंट में ज्वाइन करना है तो आपको 28 एज लिमिट होगा, आप एग्जाम मारिए, क्रैक करिए, अंदर जाइए और रिटायर हो जाइए. सो वो मॉडल चेंज हो रहा. इवन इंडिया में अभी रिसेंटली हुआ था कि जॉइंट सेक्रेटरी, one of the most critical positions and government level पे, तो उसमें lateral entry open to everyone to come and join, right? So opportunities open up बहुत ज्यादा हो रहा है, देखना है और seize करना है. That would be the thought from my side. A very positive approach towards this, Srinivas. Really appreciate it. Now, आपने जैसा कि बताया कि लोगों को स्पेसिफिकली जिस ऑर्गेनाइजेशन को IMF हो गया, UN हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इन्हें अच्छा टैलेंट चाहिए, बट कहीं ना कहीं वो कमी है. बट जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जिनका एक सपना है कि आउट ऑफ इंडिया जाके काम करना है. मे बी मुझे भी वर्ल्ड बैंक के साथ काम करना है, IMF के साथ काम करना है, UN के साथ काम करना है, या एज एन इंडियन जिसने इंडियन CA किया है,
can I build my career over there? Is there a possibility? Bilkul, absolutely. And there are quite a lot of people, chartered accountants who took that route and joined. तो इसके लिए एक particular सिंगल ट्रैक तो नहीं रहेगा, इसमें मल्टीपल ट्रैक्स ओपन है, इसमें देखना पड़ेगा कि किसको क्या सूट करेगा. फॉर एग्जांपल, एक जो मैं बोला है कंसल्टेंसी रूट, तो कंसल्टेंसीज हमेशा ओपन अप होता रहता है एंड पीपल स्टार्ट ऑफ एज कंसल्टेंसीज, and all these organizations, they advertise the positions publicly, and then इसमें catch ये है कि you need to really, the competition is global, right? तो आपको एंट्री के लिए तो कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, उतना कंपटीशन के लिए आपको आपका सीवी, आपका एक्सपीरियंस प्रोफाइल, काफी स्पेसिफिक एक्सपर्टीज होना है. लेट्स से फॉर एग्जांपल, एक गवर्नमेंट प्रोग्राम बजटिंग कैसा करती है, और फॉर अनदर एग्जांपल मे बी हेल्थ सेक्टर में हेल्थ बजट कैसे प्रिपेयर करेगा, जस्ट टेकिंग सम एग्जांपल्स. तो उसमें आपको इतना डिटेल्ड एक्सपीरियंस एंड नॉलेज चाहिए to be really be able to go there for many of the development related aspects. Then there are some things which are back office functions, like just say these organizations also have all the typical, like they have to prepare their own budgets, their own accounts, their own internal audit, which is quite a straightforward kind of a task. So one has to understand what are the opportunities, what are the tracks. So it's always good to know people who have already worked, so to learn from them and plan the career, plan your own current activities to be more suitable for the positions that you are aspiring for. आज आप आज क्या कर रहे हैं, that has to have an impact on आप कल क्या करने वाले हैं, आप क्या एस्पायर कर रहे हैं. यूएन में ज्वाइन करना है, सो एंड सो जॉब लेना है, फलाना जॉब लेना है, तो उसके लिए प्रोफाइल आपको आज बनना है, उधर जाके कभी नहीं बनेगा. They will take only ready-made. International organizations normally want ready-made experts, at least in the middle or like reasonably experienced. Entry level pay, it could be without much experience, but entry level pay, then the catch would be the academic credentials should be really top-notch. इतना अच्छा होना है, top class academic record which will match up globally. Definitely. So it is like different tracks. Each person has to see their own, what's there with them, what are the opportunities that they can look at, and then consciously work towards that if they want to pursue a career in international organizations. Very much valuable session. I think in last 5 to 7 minutes, Srinivas, itself is a big session for people who really want to build their careers in the public organization globally. So if you have to sum it up, Srinivas, and let's say somebody is working in big fours or maybe some big corporates right now, and they're like, yaar, mujhe jana hai. What should be the broad level steps? Like let's 4 या 5 step ऐसा कुछ आप बताना चाहेंगे कि आई नो कि बहुत कॉम्प्लेक्स दुनिया है, तो आप एकदम स्पेसिफिक नहीं दे सकते हैं, बट क्या ऐसे 3 से 5 आप स्टेप्स देना चाहेंगे अगर वो आज एक किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं या फिर बिग फोर में, बट उनका एम्बिशन है वर्ल्ड बैंक जाने का, आईएमएफ जाने का, यूएन जाने का? The person should be very clear why the person really wants to go there. उससे आधा problem normally solve हो जाता है, because half the time, particularly already reasonably good position में, job में जो है, वो more or less without any understanding will aspire something distant is good kind of a thing. So first is like, why? Is it because you want to contribute to development? Then that's a good reason. Is it a particular place that you want to live in? That's a good reason. You could have your own personal, family, overall circumstances. First clear that up. Once you clear that up, I would say that identify what are the organizations doing, what's their core business about, and in that core business, what is it that you can contribute, right? तो आपको वो क्लियर एस्टैब्लिश करके उसको डेवलप करके, then you straight start applying. Actually you start applying and work through the interviews, and actually all these interviews where one, even if one doesn't get selected in the first instance, are valuable experience for
further development, right? So that would be my suggestion. So it should go into like, if you really want to enter, they want talent. All in global organizations want great talent. If the person has great talent, it's a matter of time when this will happen, and how much energy and passion the person has, really the interest to really go out there and be there. Absolutely, a very valid point. It's not about if it will happen, when it will happen, that you rightly pointed out. And अगर आपके पास right reasons है वहां जाने के, और आप उस चीज को हासिल करने के लिए committed हो, someday you will be in World Bank or IMF or maybe UN, and probably you want to drop a note to Srinivas because of his insights. You are able to achieve that dream for your family, for yourself. So Srinivas, अभी आप इंडिया में काम कर चुके हैं, आज आप वॉशिंगटन डीसी में हैं, वर्ल्ड लेवल पे आप काम कर रहे हैं, डेफिनेटली आपके पास एक डिग्री है, बट उसके अलावा ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जिसने आपको रियली हेल्प किया है टू रीच एट द लेवल वेयर यू आर टुडे? शुभम, ये मैं भी सोचता रहता हूँ कि क्या मेरा स्ट्रेंथ है एंड क्या फर्दर मैं फाइन ट्यून कर सकता हूँ. सो मेरा पर्सनल, इन माय केस आई फेल्ट कि जेन्युइन पॉजिटिव एनर्जी जो मुझे नेचुरली होता रहा इन वेरियस पोजीशंस. बिकॉज आज के दिन में इफ आई लुक बैक एंड right from starting as article clerk days and as a unpaid typist of in my father's office in my 9th grade, 10th grade, from that day till day, every job was super satisfying. So that there's something like, once you get that positive attitude with your job, it automatically works. And the genuine, there are always people who are better than you. There are always कुछ लोग आप कुछ लोग से आगे होंगे और आपसे और कुछ लोग आगे होंगे. सो you don't need to compete, you need to leverage, you need to support जो लोग है आपको जिनको आगे लेके जाना चाह रहे थे उनको सपोर्ट करिए, और जो आपसे बेटर है उनसे क्या आप सीख सकते हैं और उनके थ्रू क्या काम कर सकते हैं, मिलके उनके क्या कर सकते हैं. That was my approach always, to make opportunities and create win-win situations. Eventually organizations and teams are nothing but individuals. So individuals together work well, apne aap things will start flying, and not taking life too seriously and actually enjoying what you're doing. So that has been my consistent approach all through. Absolutely. So डिग्री ही जरूरत नहीं है, बट एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना जरूरी है, एक बिगर आउटलुक होना चाहिए चीजों को अगर देख रहे हैं आप तो, और उस वजह से आप लोगों को समझाना चाहेंगे कि दे कैन ऑल्सो थ्राइव. नाउ श्रीनिवास, आपको भी पता है कि मैं आपको वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट में मिला, जब मैंने आपको सुना, जब आप एक पैनलिस्ट थे वहां पे. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एज अ प्रोफेशनल, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके पास वो पब्लिक स्पीकिंग की स्किल है, इतने बड़ी स्टेजेस से आप बात कर रहे हैं. सो वाज इट बिकॉज ऑफ योर रोल, या फिर आपको ऑलरेडी पहले से इंटरेस्ट था एंड नाउ इट इज एडिंग मोर वैल्यू टू योर प्रोफेशन लाइफ? थैंक शुभम. मैंने डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्पीकर्स को जनरली देख रहा था. सो पब्लिक स्पीकिंग जनरली इज a great skill to have, but it's not necessary always that one need to be a great public speaker to do well. So that's first I would like to say that. मेरे personal experience में ये था कि it was twofold. One, my dad was a phenomenal speaker in Telugu and English. So I grew up as a child watching him speak, and I always wanted to be able to speak like him. So it part of it was coming naturally, and then I very consciously cultivate कर रहा था वो skill को, and it's a learnable skill. ये actually जो blood में आया type skill नहीं है. Public speaking का काफी learnable skill है, and a skill काफी useful है. In fact, if it's not there, it doesn't mean it is a problem, but if it is there, it's a huge asset, kind of a thing. And once I'm in international fora presenting on behalf of PIFA, the Public Expenditure and Financial Accountability Framework, which is a gold standard framework which I work with, used in 155 countries. So I'm required to speak to various ministries of finance, explain to them how the structure is and how assessment has to be done and how the government finance systems
systems have to improve. So the ability to communicate always makes it easier. People receive it better, and things. It's a win-win situation दोनों sides के लिए. Absolutely. Is there anything which you have observed as an Indian when you go to US and maybe let's say you are speaking to some other nationals? Is there any particular lesson that you would like to share with our audience, which they can be mindful if they are speaking with somebody from US, UK, maybe some other countries? एक तो मैं so being actually जैसे small town, a mufsal town, born and brought up kind of a background से आया, तो over time what I realized is many things which we think are right, over time you will know that they're not. They're not so much right as you think. बचपन में या so actually that openness in mind, the earlier you get, particularly in international career, it's better because international career में काफी cosmopolitan culture hai, different viewpoints hai. Luckily, organization like IMF, World Bank, and all these organizations, people are also already there, multicultural, right? Actually, organization में हर country का लोग होते हैं. So to that extent, it's easier because you see various. But even if you are going into a completely an environment where it is like I worked in Muscat, it's a different environment completely. Like in the ministry, प्राइवेट सेक्टर में मस्कट में बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, गवर्नमेंट में बहुत नहीं है. We were very few in the government actually at that time. Otherwise, everyone was a national. So उनका कल्चर में अडॉप्ट करने के लिए, so to that extent you need to have that openness in mind to see what they think. At the same time, you do not need to become them. That's something I told myself, and I never try to be. तो एक consciously मैंने सोचा था कि मेरा accent change करने का जरूरी नहीं, मेरा ओवरऑल थिंकिंग चेंज करने का जरूरी नहीं, ड्रेसिंग चेंज करने का जरूरी नहीं. ओनली वन थिंग, एबिलिटी टू एक्सेप्ट दूसरे का व्यू पॉइंट एंड अंडरस्टैंड इट फ्रॉम देयर थिंकिंग, वो काफी है. एक्सेप्टेबल उस, एंड पीपल अप्रिशिएट दैट. बी योरसेल्फ बट एक्सेप्ट अदर्स व्यू पॉइंट एंड go together is the mantra generally in international environment. You don't need to completely change over to be somebody else. That is such a critical lesson there, Srinivas. Thank you so much for sharing, because बहुत लोगों को लगता है कि यार मैं यूके यूएस जाऊंगा तो मेरा एक्सेंट चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो लोग मुझे स्मार्ट नहीं समझेंगे, नहीं तो मैं लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा. बट एज यू राइटली सेड, आपको वो सारी चीजें चेंज नहीं करना है. यू हैव टू बी यू, बट मेक श्योर you understand other person's perspective, you see from their eyes, you be in their shoe, and उसके बाद आप communicate करें, so that will be a perfect harmony between both the parties. So very important lesson. अगर national market के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो श्रीनिवास, एक चीज आपने बताई ड्रेसिंग के बारे में भी, and I can see right now you are in USA, but still you are wearing Nehru jacket and वेरी इंडियन अटायर. और जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे, आपने बताया कि आप बहुत सारी मीटिंग्स में भी यही प्रेफर करते हैं, इंडियन ड्रेस. बट जनरली जब इंडियंस हम उधर जाते हैं तो हमें लगता है कि हमें सूट बूट में आना पड़ेगा, वेस्टर्न स्टाइल में आना पड़ेगा, अदरवाइज प्रोबेबली पीपल विल थिंक अरे ये इंडियन अटायर क्यों पहना है. डज इट मेक यू समटाइम्स अनकंफर्टेबल, और डू यू थिंक पीपल विल बी जजिंग यू एंड मे बी दे मे अंडरमाइन यू बिकॉज यू आर वेयरिंग एन इंडियन ड्रेस? मुझे तो मेरा एक्सपीरियंस में तो पीपल ऐसा लगा कि people were judging, but judging positively. कभी मुझे ये फीलिंग कभी नहीं आया कि that's a minus. In fact, it on the other hand, मेरा इंटरेक्शन में ये लगा कि people don't like complete stereotyped. Reality is like the very fact that दूसरे कंट्री का आके काम कर रहा is itself means that कुछ है इसीलिए आके काम कर रहा उनके. So वो जो ला रहा वो सब लाओ, क्यों ओनली ये पार्ट ऑफ द टेक्निकल नॉलेज ही क्यों लाओगे, द ओवरऑल एक्सपीरियंस दो, बिकॉज एवरीबडी लाइक्स टू सी द ब्रॉडर, and that's particularly so with international organizations. It's very positively received and respected. That's amazing, Srinivas, because आप अपने आप को सिर्फ टेक्निकल नॉलेज के साथ नहीं ला रहे हो, आप अपने पूरे who you are, you are bringing your entire Srinivas to the company and to the country. So that's such a valuable lesson. One last thing, Srinivas, अगर जो भी viewers आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं,
and they are inspired to build an international career. और वो कहीं ना कहीं आज फील करते हैं कि whether it will be a right choice, I don't know where to go in career. आज मेरी उम्र 25 साल है, 26 साल है, या तो शादी होने वाली थोड़े महीनों में या हो चुकी है. What is the career advice that you really want to give them so that they always thrive in their professional career? शुभम, मेरा पर्सनल व्यू ऑलवेज हैज बीन कि इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल, लोकल, ये डिस्टिंक्शन में ज्यादा मत जाना चाहिए. ये सीधा जो काम करना, जो करने में मजा आएगा वो टारगेट करो, एंड उसका कॉम्पनसेशन आपको सूट करेगा या नहीं करेगा, और फॉर द कॉस्ट ऑफ लिविंग डेफिनेटली चेक कर लो. बट जो इफ यू आर वर्किंग इन एन एरिया जिसमें आपका पैशन है, दैट विल टेक यू ऑलवेज प्लेसेस. एंड be open to the days of, say, categorization की international career, Indian career, ये खत्म हो गया. COVID-19 has even further killed this. So in a positive way, that there's no further, you can have an international career sitting in your town in India. And that's where, like, if you look at if you see the trajectory of countries, it's the sheer population and the knowledge India में जो create हो रहा, उससे इतना opportunities increase हो रहा within India. So there are people already who are doing much better sitting in their own homes than even physically traveling and living in other countries. So it is eventually, what is my role in this overall global job market? Where I want should be more, I like the city, so I want to be, that's okay. But essentially, calm wise, what is the work that I'm giving? Am I going to get satisfaction out of it? And be open and be moving from state level career to national level career to international, and come back. I see myself as like that. I moved between totally town-based career to now completely international career, but I'm super ready for a career move anytime, because each career move is always a progression to the next level. You are using what you already gained it and making it even more effective at the next level. That would be my suggestion to all friends who may be watching. So to go by what is your skill set and your passion, and let things flow. That can be an international career, which will help you learn and later even to a great local national career. International career as a stepping stone for a national career, which may be even better than an international career in the long run. Absolutely. Thank you so much, Srinivas, for your time, for your immense value. एंड वो सारे इंसाइट शेयर करने के लिए जो जनरली लोग नहीं समझ पाते हैं, और गूगल से वो नॉलेज कभी नहीं मिल सकता है जो आपने आज हमें दिया, कि किस तरह से लोग अपना ग्लोबल करियर बना सकते हैं, किस तरह से अपनी कंट्री, अपने देश के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर वो पब्लिक सेक्टर में आते हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, श्रीनिवास, and really appreciate it. Thank you so much, Shubham. See you sometime in Washington DC. Absolutely. All right, bye bye. Thank you so much एपिसोड देखने के लिए. सबसे पहली चीज मैं आपको वेलकम करना चाहूंगा अगर आप पहली बार ये चैनल या एपिसोड देख रहे हैं तो. सेकंड चीज आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाई आई रिकॉर्ड दिस एपिसोड. सबसे बड़ा रीजन है कि जब मैं भी अपने इनिशियल पीरियड में था करियर के, नोबडी वाज देयर टू गाइड मी, टू शो मी द पाथ. एंड जब मैं अपने मेंटोर से मिला और मैंने और सक्सेसफुल लोग देखे, मैंने सोचा कि ना कि उनकी विजडम को अपने तक रखा जाए, बट आपके साथ भी शेयर किया जाए. एंड इसी मकसद के साथ मैंने वो रिकॉर्ड करना चालू किया एंड पब्लिश करना चालू किया. अभी तक मैंने काफी सारे एपिसोड कर चुका हूँ, आगे भी बहुत सारे एपिसोड आने वाले हैं. सो मेक श्योर अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो आप दूसरे एपिसोड भी देखें, उनसे कुछ सीखें, एंड डेफिनेटली डू शेयर विद अस अगर आपको उससे कोई भी चेंज अपने करियर में या लाइफ में मिलता है तो. विल बी मोर देन हैप्पी टू नो दैट. एंड रिमेंबर, यू आर बोर्न टू थ्राइव एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग to make it happen, and I'm here to help you. I'm on a mission to enable 1 lakh professionals to build a thriving career. Thank you.